Warm welcome, my dear students of this academy. You can see this is your second chapter, sorting materials into groups. Okay, क्या materials होते हैं groups के अंदर? Okay, let's understand this sorting materials into groups. So let's understand objects around us. So we have seen that our food and clothes have so much variety in them. क्या होती है, हमने देखे हैं कि जो food और clothes की बहुत सारी variety होती है, right? So not just food and clothes की variety, there is such a vast variety होती है of objects everywhere. Okay, so we see around us a chair, a bullock cart, a cycle, cooking utensils, books, clothes, toys, water stones, and many other objects. All these objects have different shapes, colors, and uses, right? So look around and identify objects that are round in shape. ठीक है, जो राउंड इन शेप के होते हैं. Our list may include a rubber ball, a football, and a glass marble. If we include objects that are nearly round, our list could also include objects like apples, oranges, and an earthen pitcher like घड़ा. Okay, तो इस टाइप से जो है इनके शेप्स होते हैं. You can see. Let us say we wish to make a group of objects that are made of plastic. जो किससे होते हैं? प्लास्टिक के से. Buckets, okay, lunch boxes, toys, water containers, pipes, and many such objects may find a place in this group, right? There are so many ways to group objects, and in the above examples we have grouped objects on the basis of their shape or the materials they are made from, right? So all objects around us are made of one or more materials. So these materials may be glass, metal, plastics, wood, cotton, paper, mud, or soil. Can you think of more examples of materials? Activity 1. Let us collect as many objects as possible from around us. ठीक है, let's see. Each of us could get some everyday objects from home. We could also collect some objects from the classroom or from outside the school. से हम collect कर सकते हैं. Okay, किए होंगे हमने. Chalk, pencils, notebook, rubber, duster, and hammer. Hammer means क्या होता है? Yes, हथौड़ा, right? So nail sharp, spoke of a wheel, bat, matchbox, salt. Okay, salt, potato. We can also list objects that we can think of but cannot bring to the classroom. For example, wall trees, doors, tractor, road. Okay, separate all objects from this collection that are made from paper or wood. Okay, so this way we have divided all objects into two groups में इसको divide कर सकते हैं. One group has the objects that are made from किससे बना? पेपर से और wood, while the other जो group होता है has the objects that are not made of these materials से नहीं बनते. Similarly, we could separate the things that are used for preparing food. Okay, so let us be a little more systematic. List all objects collected in table 2.1. Try to identify the material that each one is made of. It would be fun to make this a large table, okay? Collecting information about as many objects as possible. Okay? It may seem difficult to find out the materials out of which some of these objects are made. In such cases, like discuss with your friends, teacher, and parents to identify the materials. This is an activity. Okay, so let's understand this table 2.1, objects and the materials they are made of. Okay, objects like a plate, थाली. Materials they are made of किससे बनता है? Steel, glass, plastic, any other से. Pen में क्या होता है? Plastic and metal के बनते हैं, right? So let's understand activity 2. Table 2.2 lists some common materials. You can also add more materials in column 1 that are known to you. Okay, so now try and think of everyday objects you know that are made mainly of these materials and list them in column 2. Okay, you can see Bozu wants to know whether we found some materials that were used for making
मोर देन वन टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या वो तूने क्या जाना कि जो मटेरियल्स होता है कैसे कैसे वो बनते हैं, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड टेबल 2.2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड from the same material. Okay, so material wood, paper, leather, plastic, cotton. wood क्या किससे क्या बनता है? chair. objects made of these materials. Okay, wood से क्या क्या बनाते हैं? chair, table, plow, blow cart and its wheels. पेपर से क्या बनता है? बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर्स, राइट। सो व्हाट डू वी नीड फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स? कैसे फाइंड कर सकते हैं, राइट। फर्स्ट वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स इन मैनी डिफरेंट वेज। वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल, एन ऑब्जेक्ट could also be made of many materials, and then again one material could be used for making many different objects. So what decides which material should be used for making any given object? It seems that we need to know more about different materials. Properties of materials. Have you ever wondered why a tumbler is not made with a piece of cloth? ठीक है, क्या आपने वंडर किया है कि क्यों जो टम्बलर होता है वो नहीं बना होता एक पीस ऑफ क्लोथ से? ओके, सो कीप इन माइंड okay that we generally use a tumbler to keep our liquid. Therefore would it not be silly if we're to make a tumbler out of cloth? What we need for a tumbler is glass, okay, plastic, metal, other such material that will hold water. जिससे क्या होता है? वाटर बनता है, ठीक है, जो वाटर को होल्ड कर लेता है, ठीक है, बनता नहीं, सॉरी, क्या करता है वो? होल्ड कर लेता है, पकड़ लेता है। आप देख रहे हो स्टेप से वो बना रहे, तो क्या होता है? वाटर से उससे तो नहीं हो रहा है ना, क्लोथ से नहीं रुक पा रहा है वाटर, राइट। सो सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग वेजल्स, ठीक है, हम नहीं कर सकते हैं, ऐसे टाइप से बना सकते हैं। ओके, सो वी सी दैन दैट वी चूज अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग, उसके प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है बेटा? प्रॉपर्टी पे। एंड द पर्पज फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज्ड, ओके, क्या उसका यूज है। सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स? क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है दैट वुड बी इंपॉर्टेंट है फॉर देयर यूजेस के लिए? क्या 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 उनके यूजेस होते हैं? सो सम प्रॉपर्टीज आर डिस्कस्ड हियर, ओके, कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिस्कस्ड करिए। सो मटेरियल्स अपीयरेंस क्या होते हैं? जो मटेरियल्स होते हैं यूजली जो लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर से, जैसे वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। आयरन से क्या होता है? वो डिफरेंट होता है। आयरन जो अपीयर्स होते हैं डिफरेंट फ्रॉम लाइक कॉपर और एल्यूमिनियम में एट द सेम टाइम। तो देयर मे बी सम सिमिलरिटीज between iron, copper, aluminum that are not there in wood, right? So let's understand activity 3. Collects small pieces of different materials like paper, cardboard, wood, copper, wire, aluminum, seed, chalk. So do any of these appear shiny? Separate the shiny materials into a group. Now observe as the teacher cuts each material into 2 pieces and look at the freshly cut surface. What do you notice? क्या आप notice करते हैं? So does the freshly cut surface of some of these materials appears shiny? So include these objects also in the group of shiny material. Do you notice such a sign or luster in the other materials? Cut them any way as you can. Repeat this in the class with as many materials as possible and make a list of those with and without luster. Instead of cutting, you can rub the surface of material with sandpaper to see if it has luster. Okay, understood completely? Okay, सो लसर मीन्स क्या होता है? शाइन करना ना। अभी यहाँ पे क्या दे रखा है? शाइन और लसर, या तो हम शाइन बोल देंगे या लसर बोल देंगे, ठीक है, लस्टर इन द अदर मटेरियल। सो कट दैम एनी वे एज यू कैन, आप कर सकते हैं जो भी आप करना है। रिपीट दिस इन द क्लास में, रिपीट करिए विद एज मैनी मटेरियल्स एज पॉसिबल एंड मेक अ लिस्ट बनाइए विद एंड विदाउट लस्टर के, इंस्टेड ऑफ कटिंग, ठीक है, कटिंग ना करें। यू कैन रब कर सकते हैं सरफेस को मटेरियल विद सैंड पेपर टू सी इफ़ इट हैज़ लसर, ठीक है, कि शाइन होता है या नहीं। ओके, सो सी हियर कटिंग पीसेज ऑफ मटेरियल टू सी इफ दे हैव लसर। यू कैन सी शाइनिंग हो रहा है ना? यस। सो मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजली मेटल्स। तो जो मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसमें चमक होती है, किससे? मेटल्स से।
होते हैं ना यूजली, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स के एग्जाम्पल होते हैं आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड। ओके, एंड अदर भी होते हैं एग्जाम्पल। ओके, सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन, बहुत कम किसी में रहती है, ठीक है, एंड अपीयर करता है डल, बहुत डल में, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम, क्योंकि उसमें क्या होता है, एयर का एंड मॉइस्चर का एक एक्शन दिखाई देता है, ठीक है। विद देयरफॉर नोटिस द लस्टर, उसमें हम क्या देखते हैं, आप क्या जैसे सोने की आप चमक देते हैं, ठीक है, गोल्ड की। सो ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। सो व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ ऑन अ वर्कशॉप में आप होते हैं, लुक आउट फॉर फ्रेशली कट करता है वो सरफेस मेटल रोड से टू सी इफ दे हैव लस्टर। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस हार्डनेस। व्हेन यू प्रेस डिफरेंट जो मटेरियल्स होता है विद योर हैंड से जब हम प्रेस करते हैं, ठीक है, सम ऑफ दैम मे बी हार्ड होते हैं टू कंप्रेस वाइल अदर्स कैन बी इजली कंप्रेस्ड हो जाते हैं। टेक अ मेटल की, अगर हम मेटल की लेते हैं, ट्राई करते हैं टू स्क्रैच करने के लिए, ठीक है, द स्क्रैच विद इट द सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड, जो उसका सरफेस होता है, ओके, पीस ऑफ द सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड का जो सरफेस होता है, एल्यूमिनियम, अ पीस ऑफ स्टोन हो गया, अ नेल हो गया, कैंडल हो गया, चॉक हो गया, और एनी अदर मटेरियल हो गया या ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसे मटेरियल या ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यू कैन ईजिली स्क्रैच कर सकते हैं सम मटेरियल्स को, वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच, लेकिन कई ऐसे होते हैं जो एकदम से स्क्रैच नहीं हो सकते हैं। सो मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस और स्क्रैच, जो ऐसे मटेरियल जो क्या होते हैं, कंप्रेस होते हैं, स्क्रैच होते हैं, ईजिली आर कॉल्ड, उन्हें कहते हैं सॉफ्ट, ठीक है। वाइल सम जो अदर मटेरियल्स होते हैं विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस, जो नहीं हो पाते, बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है उन्हें करने में, ठीक है, कंप्रेस करने में, आर कॉल्ड हार्ड, उनको हम कहते हैं हार्ड। फॉर एग्जांपल कॉटन हो गया, फॉर स्पंज हो गया, ठीक है, कॉटन और स्पंज इज़ सॉफ्ट होता है, वाइल आयरन जो होता है वो आपका हार्ड होता है, ठीक है, आयरन क्या होता है, हार्ड होता है। इन अपीयरेंसेस materials can have different properties like luster, hardness, be rough or smooth. So can you think of other properties that describe the appearances of a material? Soluble or insoluble. Collect samples of some solid substances such as, हम कैसे कर सकते हैं, शुगर हो गया, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सॉडस्ट। सो टेक 5 glasses लीजिए, और यू कैन सी हियर 5 glasses, ओके, or beakers. Fill each one of them about 2/3 with water. Add a small amount of spoonful of sugar to the first glass, salt to the second, and similarly. Add small amounts of the other substances into the other glasses. Stir the contents of each of them with a spoon. Wait for a few minutes. Observe what happens to the substances added to the water. Note your observations as shown in the table. You can see what disappears, what doesn't. क्या disappear हो रहा है, क्या नहीं, ठीक है। So mix in different solid material in water. Salt में देखिए disappear completely in water. Disappears in water does not appear, ठीक है, कि disappear होता है और does not disappear। तो salt कैसा होता है, disappear होता है completely in water में, क्या होता है, घुल जाते हैं, राइट। शुगर क्या होता है, शुगर भी सैंड नहीं हो पाती। चॉक पाउडर भी क्या करता है, सॉडस्ट क्या होता है, राइट। सो वे यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंसेस हैव कम्प्लीटली, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कम्प्लीट डिसअपियर्ड हो जाते हैं और डिजॉल्व, जिसे हम कहते हैं वाटर में, ठीक है। वी से दैट दीज सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन वाटर, तो इसी को हम कहते हैं बेटा कि वो क्या हो गए, सॉल्युबल हो चुके हैं वाटर में, ठीक है, मतलब ये जो प्रोसेस होता है उसे सॉल्युबल कहते हैं। अदर सब्सटेंसेस डू नॉट मिक्स, okay, with water and do not disappear even after we stir for a long time. These substances are insoluble in water, यानी कि जो घुल गए वो soluble हैं, जो नहीं घुले वो क्या हो जाते हैं, insoluble. Okay, water plays an important role in the functioning of our body because it can dissolve a large number of substances. Okay, water क्या करता है, important role करता है, ठीक है, जो क्या करता है, लार्ज उसमें जो है डिजॉल्व हो जाता है। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो डिजॉल्व होते हैं। डू लिक्विड ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर, क्या लिक्विड्स भी डिजॉल्व होता है वाटर में, ओके, सो यू कैन ऑब्जर्व इट। सो एक्टिविटी 5, कलेक्ट सैम्पल्स लीजिए विनेगर का, लेमन जूस का, ठीक है, यही हो गया आपके लिक्विड, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, कैरोसिन हो गया या एनी अदर लिक्विड हो गया, ठीक है, ग्लास टम्बलर, ओके, एक ग्लास ले लो, ठीक है, fill it up to half with water, okay, add a few spoonful or one liquid to this and stir it well, डाल दो आप। स्टिर क्या होता है, जो ऐसे करके
जैसे ड्रॉप्स वो करते हैं, ठीक है. लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट्स. सो ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्सेस विद द वाटर. रिपीट द सेम विद अदर लिक्विड्स. एज मैनी different liquids as are available to you. Write your observation in table. Okay, so let's observe it. ओके जो स्टर होता है STIR क्या बोलते हैं उसे स्टर. वो क्या मीन्स क्या होता है, जैसे हम उसको क्या करते हैं हिलाते हैं, ठीक है. अंडरस्टूड. सो अच्छे से मतलब क्या करो मिक्स करना होता है, राइट. सो कुछ ऐसे जैसे अगर ऑयल डालेंगे तो ऑयल नहीं हो पाएगा. ऑयल क्या होगा, ऑयल डिजॉल्व नहीं हो पाएगा, राइट. उसे इनसॉल्युबल कहेंगे. सो एड अ फ्यू स्पून्स फॉर वन लिक्विड टू दिस एंड स्टर इट वेल. लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट्स. ऑब्जर्व करिए वेदर द लिक्विड मिक्सेस विद वाटर. रिपीट द सेम विद अदर लिक्विड्स एज मेनी डिफरेंट लिक्विड्स एज आर अवेलेबल टू यू. राइट योर ऑब्जर्वेशन, ठीक है. अगर आपके पास है तो आप कर सकते हैं. लाइक विनेगर जो है मिक्सेस वेल बहुत अच्छे से हो जाता है. लेमन जूस होता है या नहीं, बिल्कुल अच्छे से हो जाता है. मस्टर्ड ऑयल होता है या नहीं, कोकोनट होता है, कैरोसिन होता है. तो ये आपको देखना है. यू कैन सी हियर इन figure 2.5, right. Some liquids mix well with water while some others do not, right. So this one is, we notice that some liquids get completely mixed with water, some others do not mix with water and form a separate layer when kept aside for some time. Okay, अगर हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो आप देखेंगे जो उसकी लेयर होती है वो एक साइड हो जाती है, ठीक है. बोजू सजेस्ट करता है दैट वी ऑल्सो चेक इफ द लिक्विड्स दैट वी आर यूज्ड इन एक्टिविटी 5 मिक्स वेल विद सम लिक्विड अदर देन वाटर. पहली इज क्यूरियस. पहली क्या है बेटा, क्यूरियस है, ठीक है. टू नो वेदर ग्लास वेदर गैसेज ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर. की गैसेज हो सकती हैं. सो सम गैसेज आर सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज अदर्स आर नॉट. हो सकती है वाटर यूजली हैज सम has small quantities of some gases dissolved in it. For example, oxygen gas dissolved in water is very important for the survival of animals and plants that live in water. Objects क्या होते हैं में float और sink in water. आपने देखा होगा कुछ float हो जाते हैं, कुछ जैसे कि sink हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि डूब जाना, ठीक है, in water में. So while doing activity 4 you might have noticed that the insoluble जो solids होते हैं separated out from water, ठीक है, आप बाहर आ जाते हैं. यू मे हैव ऑल्सो नोटिस दिस विद सम लिक्विड्स इन एक्टिविटी 5. सम ऑफ दीज मटेरियल्स दैट डिड नॉट मिक्स विद वाटर, कुछ नहीं होते हैं, फ्लोटेड टू द सरफेस ऑफ वाटर में फ्लोट करते रहते हैं. अदर्स में हैव संक हो जाते हैं, ठीक है, डूब जाते हैं टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर, राइट. We notice many examples of objects that float in water or sink. Dried leaves fallen करती है on the surface of a pond में. A stone that you throw into this pond, ठीक है, स्टोन जो होता है वो नीचे हो जाता है और जो आपकी ड्राइड लीव्स होती हैं वो ऊपर हो जाती हैं, ठीक है, लाइट वेट के कारण. सो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी की अगर हम डालेंगे दैट यू लेट फॉल इन टू अ ग्लास ऑफ वाटर, वो भी फॉल करेगी. वट हैपन्स टू ऑल ऑफ दिस, और का क्या होता है, ठीक है. सो बोजू वुड लाइक यू टू गिव हिम 5 example each of object that float and those that sink in water. So what about testing these same materials to see if they float or sink in other liquids like oil. की क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी. अब देखिए इसमें you might have played the game of hide and seek, जैसे हम कहते हैं think of some places where you would like to hide, जहाँ हम छुपते so that you are not seen by others. Why did you choose those places? Would you have tried to hide behind a glass of window, ठीक है, obviously not, as your friends can see through that and spot you. Can you see through all the materials? Those substances are material through which things can be seen are called transparent, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, transparent, like glass, water, air and some plastics are example transparent materials. Shopkeepers usually prefer करते हैं to keep biscuit रखने के लिए, sweets and other eatables in transparent containers में. You can see in this picture, okay, containers of glasses or plastic, so that buyers can easily see these items. दिख जाते तो हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं, हमें पता होता है, राइट. सो ऑन दी अदर हैंड, अगर इसको छुपा के रखेंगे किसी को दिखेगा नहीं, दिखेगा ना बेटा, राइट. ऑन दी अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल थ्रू which you are not able to see. These materials are called opaque, so you cannot, ठीक है. अच्छा, वन अदर हैंड में क्या होता है, देयर आर सम मटेरियल्स होते हैं थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू, जिनको हम नहीं दे सकते, ऐसे मटेरियल को ओपेक कहते हैं, ठीक है. यू कैन नॉट टेल व्हाट इज कैप्ड इन अ क्लोज वुडन बॉक्स, क्या रखा है क्या नहीं रखा है, कार्डबोर्ड कर्टन, ओके, और अ मेटल कंटेनर. सो वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओपेक मटेरियल. जो वुड होता है, कार्डबोर्ड होता है, मेटल्स, इन्हें ओपेक
का एक एग्जाम्पल कहते हैं, मटेरियल्स कहते हैं, ठीक है. सो डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट, क्या फाइंड कर सकते विदाउट एनी कन्फ्यूजन एज आइदर ओपेक और ट्रांसपेरेंट. ओके, सो टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टूवर्ड्स अ लाइटेड bulb. Make a note of your observation now. Put 2-3 drops, okay, of some oil and spread it on the sheet of paper. Look again towards the lighted bulb through that portion of the paper on which the oil has been spread. Do you find that the bulb is more clearly visible than before? But can you see clearly through the oil paper? Is everything on the other side of it visible? Perhaps not. The materials through which objects can be seen but not clearly are known as translation. Okay, so remember the oily patch on paper when we tested food item for presence of fats. आपको जैसे मैंने बताया था, that has translation too. Okay, ओके, सो ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है, जो क्या होता है पारदर्शी जिसे हम कहते हैं. ओके, सो रिमेंबर द ऑयली पैच, आपने देखा है पेपर में है ना, तो उससे जब ऑयली निकलता है तो उसका मतलब उसमें क्या है, फैट्स है. सो दैट इज ट्रांसल्यूशन टू. कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल ट्रांसल्यूशन मटेरियल के, कुछ और एग्जाम्पल बता सकते हैं. वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट. पहली सजेस्टेड कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च with your palm at a dark place. Okay, switch on the torch and observe the other side of the palm. So she wants to know whether palm of your hand is opaque होता है या नहीं, transparent or translucent. So we learned that material differ in their appearances and the way they mix in water or other liquids. They may float or sink in water, may be transparent, right? So opaque and translucent. So materials can be grouped on the basis of similarities or differences in their properties के different. Why do we need to group materials? क्यों होती है हमें जरूरत? So in everyday life we often group material for our convenience के लिए होती है, ठीक है. Convenience means सुविधा के लिए. At home we usually store things in such a manner that similar objects are placed together. So such an arrangement help us to locate them easily. Similarly, a grocer usually keeps all type of biscuit at one corner of his shop. Also all soaps at another, while grains and pulses are stored at some other places. कुछ shops में से होता है ना. Okay, so there is okay, and that is not a soaps, shops, shops. Okay, so there is another reason why we find such grouping useful. Dividing materials in groups makes it convenient to study their properties and also observe any patterns in this property. So we will study more about this in higher classes में हम पढ़ेंगे, right? So आप देखिए कीवर्ड में हार्ड का, ओपेक इनसॉल्युबल का क्या होता है, रफ होता है. जो आपका रफ होता है वो इनसॉल्युबल, लसर जो हो गया आपका सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है, जैसे चमकना होता है, ठीक है ना. मटेरियल्स मेटल्स, तो ये आ जाएगा इसमें, ओपेक हो गया, ठीक है. कीवर्ड्स क्या है हमारे पास, कीवर्ड्स क्या होता है, हार्ड का मतलब आपको पता है, इनसॉल्युबल पता है, लस्टर पता है. लस्टर मैंने क्या होता है, चमकना. मटेरियल अलग होता है, मेटल्स अलग होता है. ओपेक जो पारदर्शी हम जिसे बोलते हैं, रफ हो गया. सॉल्युबल जो बिल्कुल घुल जाता है ना. ट्रांसलूसेंट जिसे वही कहते हैं, ट्रांसपेरेंट. ये आपकी वोकैबुलरी न्यू वर्ड्स है, राइट. सो लर्न दिस वन. Okay, let's understand this summary. Okay, these are very important. Objects around us are made up of a large variety of materials में होते हैं, ठीक है. given material could be used to make a large number of objects. It is also possible that an object could be made of a single material or of many different types of materials. So different types of materials have different properties उनकी होती है. Some materials are shiny होते हैं in appearance में, while others are not. Some are rough होते हैं, some smooth होते हैं. Similarly, some materials are hard whereas some others are soft. So some materials are soluble होते हैं in water whereas some others are insoluble. Some materials such as glass are transparent and some others such as wood and metals are opaque. Some materials are translucent. Materials are grouped together on the basis of similarities and differences in their properties. Things are grouped together for convenience and to study their properties. So let's understand these exercises. Name 5 objects which can be made from wood. Okay, let's understand.
Okay, so name 5 objects which can be made from wood. So table, chair, bed, door, block, card. Select those objects from the following which sign. So glass, bowl, plastic toy, steel spoon, cotton shirt. Okay, so इनमें से कौन सा हो जाएगा? Glass, bowl and steel spoon. Okay, question number 3. Match the object given below with the materials from which they could be made. Remember, an object could be made from more than one material and a given material could be used for making many objects. So object क्या होते हैं? बुक हो गया, मटेरियल आ जाएंगे आपके अलग से. बुक, आपका बुक का क्या बनता है? पेपर. ओके, टम्बलर का ग्लास और प्लास्टिक से बनता है. चेयर हो गया प्लास्टिक, वुड. ओके, प्लास्टिक और वुड आ जाएगा. टॉय में प्लास्टिक, वुड आ जाएगा. ओके, शू में क्या आ जाएगा? शूज़ में आपका प्लास्टिक और लेदर आ जाएगा. सो लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 4. Okay, state whether the statement given below true or false. So stone is transparent while glass is opaque. False हो गया. Notebook has luster while eraser does not. False. Chalk dissolves in water. False. Okay, a piece of wood floats on water. True. Sugar does not dissolve in water. False. Oil mixes with water. False. Sand settles down in water. True. Vinegar dissolves in water. True. So given below are the name of the some objects and materials. So like round shaped, like कौन से होते हैं? बास्केटबॉल, ऑरेंज ग्लोब, एप्पल एंड अर्दन पिक्चर. ओके, पिक्चर एंड अदर शेप्स, वाटर एंड शुगर. इटेबल्स में वाटर, ऑरेंज आ जाएंगे, शुगर एंड एप्पल. एंड नॉन इटेबल्स में क्या आ जाएंगे आपके? बास्केटबॉल, ग्लोब एंड अर्थन picture. Okay, so list all items known to you that float on water. Check and see if they will float on an oil or kerosene. So wooden हो गया, block paper. Okay, balloon. Okay, hair, plastic bottle, wooden logs, boat, etc. And with float on water. A few of these like hair, balloon, car, float and kerosene or oil. Generally substances have less density than oil and water can float. For example, few types of wood have densities higher than oil but less than water, so it floats on water but not on kerosene. So find the odd one out from the following. Baby, rest others are made up of wood and are non-living things. Boat में rest others are flowers. Sand, rest others are metals. And sand, rest others are in crystal form. You can see this group. Okay, understood completely? So you have to revise this one. Thank you.